The word strategy is derived from the Greek word strategius, stratum, strategy, all of these. तो इसका जो आंसर है हमारा वो है strategius यानी कि फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन, dash can also be defined as a general direction set for the company and its various components to achieve a desired state in the future. तो dash यानी कि strategy can be also defined as a general direction set of companies and its various components to achieve the desired state in the future. Third question, dash is a concern with the determination of the basic long term goal and the objective of an enterprise, adoption of courses of action, allocations of resources necessary for carrying out this goal, policies framing, mission statement, target setting, strategic management. So, strategic management is a concern with the determination of the basic long term goal and the objective of the enterprise, adoption of the courses of action, and the allocation of the resources. Fourth question, which of the following is not a characteristic of strategic management? So, strategic issue require top management decision. Strategic issue involve the allocation of large amounts of company resources एंड स्ट्रेटेजी इशू आर फ्यूचर ओरिएंटेड. तो ये सब कुछ क्या है, सही है, तो इसलिए डी जो है वह हमारा आंसर आ जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी occupies the highest level of strategic decision making and cover action dealing with the objective of the firm, acquisition, allocation of resources, and the coordinations of strategy of various SBOs for the optimal performance. So, strategy occupies the हाइस्ट लेवल स्ट्रेटेजिक. तो इसका हाइस्ट लेवल स्ट्रेटेजी कौन यूज़ करता है, तो यह है SBU, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल कि ऑपरेशनल लेवल. तो इसका जो आंसर है वो आएगा कॉर्पोरेट लेवल. सिक्स क्वेश्चन है, द फंडामेंटल पर्पज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब एज. वो क्या रहता है, पॉलिसी या मिशन, प्रोसीडियर या फिर स्ट्रेटेजी. तो इसका जो सही आंसर है वो है मिशन. सो फंडामेंटल पर्पज यानी क्या होता है, मिशन. Seven question, the fundamental purpose of the organization mission statement is to. So create the good human relation climate in the organization. ये भी अच्छा है. Define the organization purpose in the society. ये भी हो सकता है. Define the operational structure of the organization. Generate good public relation to the organization. तो ये जो सोसाइटी वाला है, डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन पर्पज इन द सोसाइटी, हमारा आंसर जो है हो जाएगा. द एक्रोनम SWOT analysis for the SWOT. So strength, weakness, opportunity and threat, ये इसका आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला. So ninth question, which of the following is not a characteristic of strategic management that make it different from the type of management? So which is not the characteristic of the strategic management? So it is interdisciplinary, it has external focus, it has an internal focus, it concerns the present direction in the organization. प्रेजेंट डायरेक्शन ये जो है इसका आंसर नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशू कंसिडर इन डेवलपिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. सो व्हाट बिजनेस आर वी इन, व्हाट डायरेक्शंस आर वी गोइंग, व्हाट रिसोर्सेज do we have to implement our strategy, and what business are we and what to do with those business. So इसका जो सही आंसर है वो देखो, what resources do we have to implement our strategy. क्वेश्चन था कि which of the following is an issue considered in developing the corporate strategy. 11th क्वेश्चन है, which of the following is not a major element of the strategic management process. तो प्रोसेस में फॉर्मलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूट आता है, लेकिन ये जो है असाइनिंग तो बिल्कुल नहीं आता. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज अ. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए इंक्रीज इफिशियंसी, यही इसका आंसर है. इज द फाउंडेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ब्लू ओकेन. सो इनोवेशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू इनोवेशन, वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ. तो ब्लू ओकेन यानी कि क्या होता है कि ओशन, ब्लू ओशन, सो वैल्यू इनोवेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा. द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस रूटीन
The processes that determine how efficiently and effectively the organizations transform its into output are called as a core competency. When defining the strategy management, the most important thing to remember is that a living, evolving process. The organization strategy, इसका जो आंसर है सही वाला कि generally form over a period of time as a event unfold. द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कहता है, तो देखो प्राइमरी फोकस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टोटल ऑर्गेनाइजेशन, तो प्राइमरी है तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ये तो प्रोसेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सो इट प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशंस विद अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन and it help political, economical, social, technological environment to the organization. हम इन सभी के लिए काम नहीं करते. It help oriented management decisions to relevant environment condition and it help organization be proactive rather than the reactive. तो इसका आंसर जो है वो भी हो जाएगा कि ये काम नहीं करता है ऐसे. Which of the following define how each individual business unit will attempt to achieve its mission? So business strategy, corporate strategy, function strategy या फिर national strategy. Which of the following define as a individual business unit will attempt to achieve the business? तो इसका जो आंसर है वह है business strategy. Dash strategy define the use of the corporate strategy and the specific tactics for each market. Business strategy, corporate strategy, functional strategy, operational strategy. So use of the corporate strategy for the स्पेसिफिक टेक्टिक्स, तो स्पेसिफिक टेक्टिक्स बोले तो बिजनेस स्ट्रेटेजी आ जाएगा, उसका आंसर होगा. अब है यस. सो क्वेश्चन जो क्वेश्चन है हमारा वो है 22. स्ट्रेटेजी डिफाइन द डे टू डे एक्शन नीड टू डिलीवर द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, कोर स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी. तो डे टू डे यानी कि फंक्शनल स्ट्रेटेजी इसका आंसर हो जाएगा. Which of the following focus on the supporting the corporate and the business strategy? तो corporate ये दोनों के लिए कौन सपोर्ट करता है, तो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी हमें सपोर्ट करती है. Which of the following is not a primary task of strategic managers? So establishing strategy objective ये भी हो सकता है, and developing the step follow in a implementing operational level plan and defining the business, developing a mission and developing the strategy. तो देखिए इसका जो आंसर है फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी टास्क. सो प्राइमरी टास्क बोला है डेवलपिंग द स्टेप फॉलो इन द इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशनल लेवल प्लान, तो ये क्या है प्राइमरी टास्क नहीं है. 25 क्वेश्चन. द टास्क ऑफ स्ट्रेटेजी चॉइस इन्वॉल्व डेवलपिंग प्लान एक्टिविटीज विच विल इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड द कॉम्पिटिटिव पोजीशन. इसका आंसर ए है, ये हो जाएगा. Which of the following is at the core of the strategic management? So choose which organization objective to focus on. Be a being alert for the opportunity to change the work responsibility. Adaptive the organization to a change external environment. तो adaptive the organization to changing external environment. तो which of the following is at the core strategic management? तो ये वाला हमारा core strategic management हो जाएगा. उसके बाद है द कॉर्पोरेट लेवल. यस, द कॉर्पोरेट लेवल इज अ वेयर टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट ऑल एम्प्लॉय फॉर और orientation its effort to stabilize requirement need overall strategy for the entire organization and overall sales projection. तो इसका जो आंसर है कि कॉर्पोरेट लेवल वेयर द टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट सो ओवरऑल द स्ट्रेटेजी फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द थ्री मेन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो थ्री मेन कौन कौन से, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. तो इसका जो आंसर है हमारा यह है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. The functional level strategy of the marketing function is divided into various operating levels such as a marketing research, sales, promotion. These types of the strategy क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उससे, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी या फिर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी. तो इसका जो आंसर होगा ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, बिकॉज द फंक्शनल ऑफ द लेवल स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ऑपरेटिंग लेवल. उसे डिवाइड करते हैं
जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, तो ये क्या हो गया, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एलिमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. तो स्कैनिंग, फॉर्मलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, नॉन ऑफ दिस. तो ये क्या है, प्रोसेस है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस. तो ये सभी आते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द पोर्टल्स 5 फोर्सेस. तो पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर, सप्लायर, रिलेवरी अमंग द स्टेक होल्डर. तो ये जो स्टेक होल्डर वो नहीं आएगा और कॉम्पिटिंग फॉर्म में हो जाएगा. तो इसका जो आंसर है वह है सी. 32 क्वेश्चन. विच सॉरी व्हाट इज मीन बाय द टर्म स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर बोलो तो क्या होता, तो अ पर्सन हु इज रिलेटेड विद द बिजनेस. अ पर्सन हु इज रिलेटेड विद द बिजनेस, इसका आंसर ये होगा. द स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ. तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, तो देखिए, the full of set commitments, decision, action required for the firm to achieve the above average return and strategic competitiveness. तो यह है strategic management process. The goal of the organization is to capture the hearts and minds of employee and challenge them and evoke their emotion and dreams. ये क्या है, हमारा vision है. So the firm's mission. So a statement of the firm's business in which it intends to compete and the customer which it intends to serve, यानी कि mission. The environmental segment that comprise the general environment typically will not include the. So general environment typically will not include demographic factor, social culture factor, substitute product or services, technological factor. तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसका आंसर है. एन एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक सेगमेंट ऑफ द external environment will include all of the following except. So interest rate, international trade, the strength of the US dollar, the move toward a contingent workflows. तो इसका जो आंसर है वो है डी, the move the move toward a contingent workforce. प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन रिफर टू. प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हमें क्या बताता है कि बिलीव बाय कस्टमर दैट अ प्रोडक्ट इज अ यूनिक, यानी कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंट्री बैरियर टू एन इंडस्ट्री. तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये क्या है, एंट्री मतलब बैरियर नहीं है, बाकी जो है एक्सेप्टेड कॉम्पिटिटर, इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड कस्टमर प्रोडक्ट लॉयल्टी, ये सभी क्या है, बैरियर्स है. And new entries. New entries to an industry are more likely when the entry barriers are low. When? So, product differentiation in the industry is low. जब product differentiation in the industry कम होता है, so new entries in an industry are more likely when the entry barriers are low. So, according to the 5-factor model, an attractive industry will have all except the following. So अभी ये क्वेश्चन हो गया था. सो लो बैरियर्स टू एंट्री इसका आंसर है. सप्लाई विद द बार्गेनिंग पावर, मॉडरेट डिग्री ऑफ राइवरी अमंग द कॉम्पिटिटर एंड फ्यू गुड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट, ये सभी इसका आंसर है. लेकिन इसका जो पहला आंसर है ना, लो बैरियर्स टू एंट्री, ये एक्सेप्ट है. हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है कि इंटरनल एनालिसिस एनेबल अ फर्म्स टू डिटरमाइन व्हाट द फर्म. सो इसका जो आंसर होगा वो है कैन डू. सो इंटरनल एनालिसिस एनेबल फर्म्स टू डिटरमाइन कैन डू. तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कैसे लगे मुझे बताओ और सब्सक्राइब करो. ऐसे ही जो यूजीसी नेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेते आऊँगी. सो धन्यवाद.